All right, welcome to match 7 here at the Multan Cricket Stadium. It's the BFI coin toss. I've got the two captains. Of course, the home captain is Mohammad Rizwan, Multan Sultans. We got Shadab Khan from Islamabad United, their first appearance over here. And of course, our match referee, Mr. Mohammad Anis. Rizwan, you have the coin. Head. Heads is a call. Head is the ball. And it's heads. Islamabad has been put out. So, Islamabad have won the toss and Shadab, सबसे पहले बताएं क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम बॉलिंग करना चाहेंगे. बॉलिंग करना चाहेंगे. ओवरऑल आपकी टीम का एक स्टाइल है खेलने का जिसका बहुत जिक्र होता है. सो यू फील कितना यहाँ पे स्कोर ऐसा है जो चेजेबल है और इजीली हो जाएगा? ये पहले मैच की विकेट है. हाँ, देखिए अभी तक तो पिच लग रहा है कि बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो खेलता कैसा है. लेकिन जिस तरह की हमारी डेथ है बैटिंग में, हम कोशिश करेंगे जितना कम से कम स्कोर में इनको रिस्ट्रिक्ट करें. कोई चेंजेस लाए हैं पहले मैच से? जी, हमारे एक चेंज है. आसिफ भाई की जगह अबरार आया, सिचुएशन और कंडीशन को हिसाब से देखते हुए. और जिस तरह के मेरे ख्याल से थैंक यू आसिफ भाई का, क्योंकि उसने कहा कि डेफिनेटली, क्योंकि उसने टीम का सोचा और कंडीशन को देखते हुए उसने कहा कि ठीक है मैं भी भागूं. चलिए, गुड लक टू यू. थैंक यू. रिजवान से बात करते हैं. रिजवान, यूजुअली यहाँ कैप्टन्स पहले बॉलिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आ नहीं रहा है. चेज हर बार हुआ नहीं है. कोई खास वजह है या ये एक माइंड सेट है? नहीं, बेसिकली चीज़ों को देखते हुए बंदा करते हैं. वो मैं लास्ट मैच में यही कहा था कि अगर हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे या अच्छी बॉलिंग होगी तो किसी भी पिच पे मुश्किल होता है. जब विकेट गिरती है, प्रेशर आता है, स्पिन स्टार्ट होता है, स्विंग स्टार्ट होता है, और मेरे ख्याल से उस टाइम पिच के कंडीशन को नहीं देखते. मगर ज़्यादा टीमों का स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है कि वो चेस के लिए, क्योंकि थोड़ा डेप्थ इनके पास होती है बैट्समैनों की, इसलिए सारे चेस पे जाते हैं. कोई चेंजेस लाए टीम में? हाँ जी, एक चेंज है, इलियास खेल रहे हैं मिंगुल की जगह. चलिए, गुड लक टू यू. थैंक यू. Okay, so the news for the BFI coin toss is Islamabad United have won it and they've decided to bowl. Now, you speak of bowling, let me get the man who is the best at it. And he's standing on a green top at the moment. Waka, what do you make of this toss and the pitch? Don't get fooled by this pitch. We are playing on that one because this is just they sprinkled the grass on it, the green grass on it, and then rolled it in. So this looks really, really good. But yeah, we're playing on this surface, which is very bare, very dry. I'm not really sure if it's going to spin that much because it is honestly very, very hard. So I don't think it's going to spin much. Maybe the captains might just bring the spinners early on. We've seen in this tournament that the spinners early on with the newish ball get a little bit out of this pitch. So good job, I think, by Shadab. Shadab bringing in Abrar also in place of Asif, just making one change, bringing another spinner in the side, which is a good move. I mean, it does not really matter on this surface that you bat or ball first. It's all about you play really, really good cricket to win on this one. It's going to be the same, bat first or bat second.